हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो। चलो लेट्स डू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ रीडिंग इट. सो देयर इज a sphere of mass m and it has a radius of root 3 meter. So here r का value is given root 3 meter and its mass is given as m, some arbitrary m. ठीक है. This is placed inside a container. Container looks like what? It has one bottom surface that is flat and side walls are slanted. ठीक है, such that this slanted wall is making an angle 60 degree with the horizontal. It is given. The sphere touches the slant wall at point A and flow at point B. And except these 2 points, it is not at anywhere in contact with the surfaces. ठीक है, so there are only two contact points. एक है B पर, दूसरा है A पर. A is point contact with the side wall, B with the bottom. Now what is happening? The container along with the sphere is rotated about the central vertical axis. Okay, like this. Container is getting rotated with omega. And it is observed that a sphere moves along with the container. So container and a sphere are moving along. कहने का मतलब क्या है? Container कैसे move कर रहा है? Container is moving in a circular trajectory. And if container and sphere are moving along, it means this sphere is also moving in that circular trajectory. Not exactly of the same radius, but yes, in circular trajectory with same omega. So when you have two bodies, let's say this is body A moving in forward direction with a speed v1, and then there is a body kept on it. If A and B are moving along, if they're together, moving together, it means what? It means A and B will maintain similar velocity in the forward direction. So for that case, relative velocity between A and B will be 0. So in this case, angular velocity we are talking about. So relative angular velocity between a sphere and this container is going to be 0. Yani ki both are going to move in a circle with same angular velocity. Okay, sorry. So it is at rest relative to the container. We can say that a sphere is at rest relative to the container because they are moving along together. Again, moving together and moving along are two different things in physics. I mean, two things can be moving together. जैसे अगर A आगे की तरफ जा रहा है, suppose कर लो बड़ा सा railroad car जैसा चीज है, it is going ahead with 1 meter per second. And there is a block on the top of it which is going forward with 2 meter per second. Still they are moving together until the time it reaches the edge and it falls out. ठीक है, like that. So यहाँ पे moving along with the container कहने का मतलब ये है कि relative velocity between these two is not positive, it is 0. ठीक है. Now let's talk about N1 and N2. The normal force applied by bottom surface is N1 and that by slanted surface is N2. So you already know the logic of how we apply normal reaction force. So that we apply along the direction perpendicular to the surface at the point of contact. So is B पे perpendicular to the surface क्या होगा? It will be along the normal, है ना? So it will be this, and at this point again perpendicular to the surface will be along the normal. क्योंकि देखो point A जो है it is both at on the surface of container and also on the surface of a sphere. और जब आप perpendicular draw कर रहे हो ना, so it is also becoming perpendicular to this portion of the sphere, and perpendicular on surface of circular thing will always pass through its center. इसलिए मैंने center से pass किया है दोनों को. ठीक है, so this one in this case is N1 and this one in this case is N2. ठीक है, चलो सबसे पहले हम सिस्टम को समझते हैं. हम इसको ऑब्जर्व कैसे करने वाले हैं. हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच N2 is greater than N1. First thing. And second thing, value of omega for which a sphere leaves contact with the flow. Leaving the contact means normal reaction 0. So it is leaving the flow. It means N1 will become 0 in second case. ठीक है, so we need to calculate N2 and N1 and for that we need to analyze the motion of this sphere. So let's analyze this system कैसा दिख रहा है. चलो मैं ग्राउंड पे बैठकर इसको पढ़ना चाहती हूँ, इसको रीड करना चाहती हूँ. तो आई एम हियर और मुझे क्या दिखेगा बताओ. मुझे ऐसा दिखेगा कि दिस स्फीयर, लेट्स फॉरगेट द कंटेनर, मुझे ये दिखेगा कि दिस स्फीयर, let's say this radius is r naught, this sphere is moving in this radius in the horizontal plane. So I will see that this sphere is moving in a horizontal circle of radius r naught. और मुझे क्या दिखेगा?
और मुझे ये दिखेगा कि दिस स्फीयर इन दिस डायरेक्शन इज इन रेस्ट। ठीक है। सो व्हाट आर द टू डिजायर्ड डायरेक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डील विथ इन दिस क्वेश्चन। तो हमारा मोशन हॉरिजेंटल सर्कल में हो रहा है, यानी कि दिस हॉरिजेंटल लाइन इज वन लाइन ऑफ इंटरेस्ट, आई विल कॉल इट एक्स एक्सिस, एंड डेफिनेटली अनदर लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू इट, so this is y axis. So whatever force is acting on this sphere is not aligned along x and y axis. We will try to break that into its component such that its component will be along x and y axis. ठीक है। बट बिफोर दैट आई विल टॉक अबाउट वन थिंग। अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ स्फीयर विल हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दिस सेंस, हाउ मच, ओमेगा स्क्वायर आर नॉट। Or if you take any other point on the sphere, let's say I'm taking this point. So this point is at a different distance from the axis of rotation, and hence this point will have different what? एंड डिफरेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डन है। इस तरह से अगर हर पॉइंट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। डन है। सो हाउ वी विल राइट इट्स इक्वेशन, क्योंकि जब हम इसके लिए हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे, वी विल राइट दैट नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर दैट इज along negative x-axis should be equal to m omega square r. So which point on the sphere we are going to consider? So overall a sphere we will consider, right? It means its center of mass, and that is at its center, geometrical center, right? So that is why in the diagram I will reduce this sphere as a point mass. It has a mass of m, this is a point mass, and it is at a distance r naught from this thing. ठीक है। So what are the forces acting here? Let's first focus on the forces. तो अगर आप forces को ध्यान से देखो तो यहाँ पे mg लगेगा नीचे, normal reaction because of contact with the bottom surface n1, and normal reaction because of contact with the slant surface n2. Now let's talk about this angle. ये angle कितना होगा? So in 9th and 10th basic geometry में हमें एक चीज पढ़ाया गया था that if angle between two line is theta, angle between their perpendiculars will be theta. So let's say this is line 1, this is line 2. Angle between 1 and 2 is 60 degree. And if you see this line is perpendicular to line 1, and this line is perpendicular to line 2. So angle between these two will also be theta. That is here 60 degree. So 60 हुआ. So this angle is 60. So if you're going to break it, अगर आप इसको ब्रेक करोगे आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि n2 को we need to break, n1 we don't need to disturb, it is already along the vertical line, and mg also, n2 we need to disturb, so n2 को आप ब्रेक कर दो, here it is n2 cos 60, and here it will be in this direction, how much, n2 sin 60. ठीक है। So now I will write it here. So in this direction n1 and another force n2 cos 60 को मैं थीटा लिखती हूँ, and in this direction n2 sin theta, and then there is mg. If I talk about writing force equation in vertical sense, so vertically it is in equilibrium, so whatever is the upward force, n1 plus n2 cos theta will be equal to mg. Let's call it equation 1. And if you want to write equation in the horizontal direction, horizontally it is moving in a circle, horizontal circle में जा रहा है, so net force horizontally has to act towards the center, and there is only one force n2 sin theta, so this force will be responsible for letting it go in this circle of radius r naught. Done है। So you are going to equate it, or you will have to equate it to m omega square r naught. This is our equation 2. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट आर नॉट, जो कि हमें नहीं पता है। हमारे क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है, दैट वी विल कैलकुलेट वेरी सुन। बट उससे भी पहले एक चीज देखते हैं, यहाँ पे n2 का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन से आप देख लो n2 का वैल्यू हमें क्या मिला, n2 is your m omega square r naught by sin theta, right? And what is the value of n1? आप ध्यान से देखो n1 क्या है हमारा, mg minus n2 cos theta. So mg minus n2, n2 क्या लिखोगे, m omega square r naught by sin theta, and क्या था बताओ, n2 cos theta, right? So n2 is this, cos theta will be this, so this will become cot theta in short.
थीटा इज 60 डिग्री, राइट? बट बिफोर वी गो ऑन टू सॉल्व दिस, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच n2 will be greater than n1. This thing we have to do, but for that we need to have had the value of r naught, और r naught हमें पता नहीं है, तो चलो r naught निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो we need to use here rigorous geometry, I would say so much. So let me do that for you. ध्यान से देखो, this distance we are interested in calculating, this is r naught, right? And this one is given, this one is given. Let's call this point whatever you feel like, p बुला लो. So this is pd is given as 2 meter, right? And we have to calculate pb. So pb will be equal to how much? Pb यानी कि r naught will be equal to how much? That is pd, that is 2 meter minus bd, है ना? So 2 minus bd will be our answer, राइट? वी नीड टू कैलकुलेट दिस। चलो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, बीडी कैसे निकाले। अब देखो बीडी क्या होगा, यहां से आप ऊपर जाओ, ये वाला वैल्यू होगा, इतना होगा बीडी, राइट? सो समहाउ इफ वी नो ए एम एंड इफ वी नो व्हाट, if we know AM, then AM is equal to BC. यहाँ पे लिखती हूँ मैं, AM is equal to BC. So we are interested in calculating BD, right? So अगर हमने BD को निकालना है तो क्या करना होगा? BC से किसको माइनस करना होगा बताओ? DC को। So BD निकालने के लिए we need two values, BC and DC. How we can calculate BC and DC? चलो देखते हैं, कुछ अच्छे से सोचते हैं और करते हैं। सो ज्यादा कुछ करना नहीं है। ट्रायंगल ओ एम ए ले लो। सबसे पहले मैं ए एम निकालने की कोशिश करूंगी, यानी कि बीसी। सो ए एम आप निकालो सबसे पहले, इस ट्रायंगल में जाओ। ए एम बाई ओ ए क्या होगा? ए एम बाई ओ ए विल बी ए एम बाई ओ ए, that is your sin 60, right? So sin 60 is how much? Root 3 by 2. I'm going to put the values. A m that we need to calculate. OA is what? Radius. So this is root 3 r by 2. R का value given in the question is how much? Root 3. So this will become 3 by 2. AM is how much? AM is your 3 by 2. Now we are interested in calculating DC. ठीक है, अब देखो डीसी कैसे निकाल सकते हैं? दिस एंगल वी नो इन ट्राइंगल एडीसी, दिस एंगल वी नो, राइट? एंड इफ वी समहाउ नो द वैल्यू ऑफ एसी, एसी बाई डीसी को क्या कर सकते हैं? tan 60, राइट? सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट एसी। उसके लिए एसी इज इक्वल टू व्हाट? एमबी। सो एसी हमें पता करना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू एमबी। और एमबी हम कैसे निकाल सकते हैं? इफ वी नो ओ एम, है ना? एम बी निकाल सकते हैं इफ यू नो ओ एम, बिकॉज ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, ओ बी माइनस ओ एम विल बी इक्वल टू एम बी. So again we need to deal with the same triangle, that is your triangle OMA, and this time we are interested in calculating OM. So आप यहाँ पे ध्यान से कर लो, OM by OA will be equal to cos 60, that is half. OM क्या हो जाएगा तुम्हारा? R by 2, that is radius by 2, and we are interested in calculating MB. तो MB हमारा क्या होगा? MB होगा radius minus OM, that is r by 2. So this is r by 2, यानी कि root 3 by 2. So MB हमें मिल गया कितना? root 3 by 2. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस MB? MB AC के बराबर होगा, राइट? सो AC हमें मिल गया। अब एक काम करो आप, अब कौन से ट्राइंगल में चले जाओ? ट्राइंगल ADC, ठीक है? AC डिवाइडेड बाई DC आप क्या लिखने वाले हो? tan 60, that is root 3. We are interested in calculating DC, right? So DC को अगर आपने लिखा तो कितना होगा? AC by root 3, and AC is how much? root 3 by 2. So root 3 by 2 by root 3. So this will become how much? Half दिख रहा है, right? So your DC is half. BC क्या आया था? आया है क्या कहीं? I mean there are so many terms and words. BD निकालना है ना हमें। BD क्या होगा? BC. BC is equal to AM. So AM हमें आया था ना, AM we have calculated, that is 3 by 2. So this is your 3 by 2 and DC is how much? It is half. So BD will be how much? 3 by 2 minus half, that is going to be 1. So BD is 1. यानी कि R naught तुम्हें क्या मिला? 2 minus 1, that is 1 meter. डन है? ये प्रोसेस करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, करना पड़ेगा, ठीक है? सो नाउ लेट्स गो विथ n2 ग्रेटर देन n1। अब आप इसको सॉल्व करो, तो n2 को आप क्या लिखोगे?
N2 को लिखोगे मैम, इसको लिख दो आप एम ओमेगा स्क्वायर आर नॉट बाई, चलो वैल्यूज पुट कर, या फिर एक बार और लिख लेते हैं साइन थीटा, and this should be greater than n1, that is mg minus m omega square r naught cot theta. ठीक है, m को हर जगह से कैंसिल कर दो, ओमेगा स्क्वायर का ही रेंज हमें निकालना है वैल्यू, ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर रहने दो, और आर नॉट क्या है तुम्हारा 1, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा बताओ, साइन 60, दैट इज √3/2, दिस इज दिस, greater than g is how much 10 minus, this is how much omega square r naught cot theta, so this is omega square r naught is 1, cot theta will be how much 1 by √3, ओमेगा स्क्वायर को राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, कितना मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, दैट इज 2/√3 प्लस 1/√3 is greater than 10, so this is omega 3/√3, that is √3, and this is greater than 10 और g जो भी लिखो, आंसर g में दिया हुआ है, so let's write it like that, sorry this was omega square, डन है, सो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, ग्रेटर देन रूट अंडर g by √3, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर फॉर द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हमें क्या निकालना है, सेकेंड केस में हमें ये निकालना है कि अगर हमारा जो स्फीयर है, इफ दैट इज लिविंग कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, then what will be the value of omega, so living contact with the surface means n1 becoming 0, यानी कि mg तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, mg will become m omega square r naught cot theta, right, m को आप कैंसिल कर दो, this is g, and this is equal to omega square r naught is your how much 1, cot 30, sorry 60 is how much 1 by √3, so omega square will be equal to how much, it will be √3g का रूट अंडर, सॉरी ओमेगा, डन है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ज्योमेट्री तो तुम लोग कर लोगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो और साथ साथ मैथमेटिक्स पे भी, बिकॉज at the same time you need to manage so many things, so you need to be in deep practice with such sort of questions for JEE advanced, ठीक है, I hope I was able to make you understand what was there in the question and how to do such questions. But even if you are having any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you.